This video is for grade UKG. Let us start. In this sheet, we are going to read 3 different parts in which we will get to know about 3 different subjects: English, Math, and EVS. So, let us start with our first subject, EVS. What do you enjoy about rainy time? Write in the boxes given below. Okay, in this you have to tell that what do you enjoy in rainy time. Rainy time means जब बारिश होती है, during rainy season, बारिश के मौसम में, बारिश के समय में आपको क्या चीज़ें enjoy करना अच्छा लगता है. Like my favorite place to visit. बारिश के समय में आपको कौन सी जगह ज़्यादा घूमना पसंद है? My favorite thing to eat. आपको सबसे ज़्यादा क्या खाना पसंद है? My favorite things to do. आपको सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद है? During rainy time. ओके, आपको बताना है कि आपको कहाँ जाना पसंद है, क्या खाना पसंद है और क्या करना पसंद है ड्यूरिंग रेनी टाइम. ओके, सो व्हाट इज रेनी टाइम? मीन्स योर रेनी सीजन. ओके, रेनी सीजन कब होता है? इन जून टू सितंबर. जून टू सितंबर जो हमारा मौसम होता है, दैट इज कॉल्ड रेनी सीजन. बिकॉज वी आर अनअवेयर ऑफ रेन एट एनी टाइम. हमें पता नहीं होता रेन कभी भी हो सकती है ना. या सो एज वी ऑल नो देयर आर 5 सीजन्स ऑफ अ ईयर. हमारे एक साल में 5 सीजन्स होते हैं. ओके, टोटल 5 सीजन्स आर देयर. समर, विंटर, रेनी, spring and autumn. So you have to write about rainy. Now let's move on to the next topic, next section, which is English. Write the missing vowel letters in the words given below. What we have to do is we have to fill the missing vowel letters. ओके, वॉवेल लेटर इसे फिल करना है. AEIOU, यही 5 लेटर्स हमें फिल करने हैं. MAP, मैप. MOP, मॉप. यहाँ आप कोई भी फिल कर सकते हो. MAP मैप भी बना सकते हो, MOP मॉप भी बना सकते हो. नेक्स्ट में SIX, 6. SIX, 6. थर्ड, मैड. MAD, मैड. MID, मिड. ओके, मिड मतलब क्या होता है? बीच में. और मैड मतलब होता है पागल. हॉट. HOT, हॉट. HAT, हैट. HIT, हिट. HUT, हट. ओके, बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं ना. Understood? So in this way you will fill these missing vowel letters. सारे वर्ड्स में आप इसी तरीके से vowel letters मीन्स AEIOU, इनमें से कोई भी एक पर्टिकुलर सुटेबल लेटर फिल करके वर्ड्स बनाएंगे. ओके, यू विल मेक दीज वर्ड्स. ओके, लेट्स रिवाइज 3 लेटर वर्ड्स. MAP, मैप. SIX, 6. TEN, 10. MAN, man. TOP, top. BUS, bus. CAT, cat. BAT, bat. FUN, fun. BUN, bun. RUN, run. COT, caught. WET, wet. PET,
pet. Okay, so these are few words with 3 letters. Okay, three letters के words हैं ये सब. Now let's move to the next question. Match the picture with the starting letter of consonant. Okay, in this we have to match the picture with their particular letter. R for rat, C for cat, and S for strawberry. R for rat. R A T. Rat. C for cat. C A T. Cat. S for strawberry. S T R A W B E R R Y. Strawberry. Let us revise A to Z with one words. Speak with me. A for apple. B for ball. C for cat. D for dog. E for elephant. F for fish. G for grapes. H for hen. I for ice cream. J for joker. K for kite. L for lion. M for monkey. N for nose. O for owl. P for parrot. Q for queen. R for rabbit. S for sun. T for tiger. U for umbrella. V for van. W for watch. X for Xmas tree. Y for yacht. Z for zebra. So this was all about English. Now let's move to our last section of the sheet. Maths. Fill in the missing numbers. Missing number fills करना है. Okay, we have to fill up the missing numbers. And how will you do it? You will read counting 1, 2, 3 and so on. And by reading the counting, you will fill these numbers. Okay, let's get started. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30. So in this way you will fill up all these missing numbers. I hope you all have understood this sheet very well. If you have any kind of doubt related to any question, you can ask me. Thank you.